alaikum everyone and welcome back to FutureServe Overseas Education Services. My name is Wardah Mazhar. And my name is Ammer Owais. Sir is currently serving as an ESL and IELTS instructor at FutureServe Overseas Education Services. So guys, before getting started, let me share a little bit about FutureServe. So FutureServe is basically an international education advisory, and we are serving into three categories. That is the career counseling, that is the international exposure, and that is the skills development. In the career counseling, we have very good, very brilliant, very well-educated, well-experienced career counselors for you people who will definitely help you find the suitable disciplines which will be helpful for you while pursuing your higher education from abroad. They also give you the insights of the universities, that is the fee structure, the eligibility criteria, and the English language proficiency tests eligibility criteria. They also help you through your visa processes, your documentation, and your application procedures. So in the international exposure, what we do is we help you through the pre and the post departure. We also give you the insights of the lifestyle and the living standards of the people you're going to spend your life with for a little longer. In the skills development section, we help you enhance your skills. We also give you the tips regarding the profession that would be suitable for you when you are working in with the job market of the place you're going to live a little longer. So this is it a little bit about FutureServe. So the topic that we are going to discuss today is all about the lexical devices, or you can say the lexical resources, and Mr. Ammer Owais is going to brief us, going to tell us the importance of lexical resources. He is also going to give us an overview about the lexical resources. Sir, over to you. Okay, Ji. In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent, the King of the Kings and the King of the Day of Resurrection. Thank you so much for giving me a chance to speak about a linking device, what linking device is, and what the linking devices literally are, and why are they known, and on what places they're actually used. So, I really want to throw light on the linking devices, and I want to explain them briefly. That what linking devices are and to what are their usages. So basically, linking words or linking devices are very important, and they're mandatory for IELTS writing task 2. Now, if I talk about writing task 2, you must get good bands in your writing examinations if you really want to get a certified result. Basically, if I talk about the list, so I have the lists which I have made in order to explain about the importance and about the use and about the needs of the linking devices or the lexical resources. Now, the lexical resources and linking devices, they both are same. They're known as same. Why? And you know, what is the definition, right? The definition of the linking device is to connect the word or to paragraphs or to phrases with each other, just to show the example and explanation of a particular word. So if I talk about the linking devices, I would say, you know, we have to talk about the coherence, we have to talk about the lexical resources which are used in writing sector in order to show the fluency in your writing. Now, fluency is commonly used in English spoken, but when it comes to writing, you must bring that fluency that your mouth should not stick while reading. You have to use that common words in order to get a high and sophisticated mark. I get it. So if I talk about the linking resources, I would say, okay, in writing task 2, you will have a passage, you will have a topic, you have to write down passage on it, you will have to write on around 250 words, and then you have to go accordingly. So if I talk about the list, you know, when you talk about the orders, they come in the middle of the sentence. They have 3 basic places. They can come in the middle of the sentence, they can come in the start of the sentence, they can come at the end of the sentence. So they can use any of the words accordingly. Now, it depends on how you use that word accordingly. So you can simply start firstly, secondly, thirdly, fourthly, lastly, last but not least, finally. There are, you know, what known as the linking devices. And you are linking these sentences or you know what I mean. Exactly. You are actually connecting the links with another passages. You are actually converting the paragraph with another paragraph. Exactly. So these are the linking devices. Now we have rules and regulations. We have separate paragraphs, and we have separate, I would say, graph
to discriminate between the words that on such particular cases you have to use that appropriate words. Okay. Now you cannot use the linking devices of giving the example into the in place of giving reasons. So while giving reasons, there are appropriate linking devices. For giving examples, there are another linking devices. For starting, for ending, to conclude. All of these words have separate linking devices. So let me tell you something. When you talk about the results, when it comes at the end, like when you talk about the conclusion of a sentence, so you would simply say as a result. When you talk about result, as a result, consequently, therefore, thus, hence, so, for this reason, to conclude, to sum up, to summarize. You know what I mean? Yeah. So these are the words when you're actually giving the results or you are actually giving the consequences. Okay. When you give the results or when you give the consequences. The you are conclusion, using can we say it yes, you can simply call it conclusion. Okay. Right? Okay. So let me come towards the information. If I'm Okay. giving information about someone or something. Okay. You know what I mean, madam? When I give information of someone or something. Right. So I would write in addition, additionally, furthermore, moreover, also, not only but also, as well as, and such words. It also beautifies your writing as It well. actually defines the way of the sentences you are bringing in your conversation. जैसे उर्दू में हम कहते हैं लिहाजा अलबत्ता वगैरह ये है ना अच्छा सही सेम टू सेम उसी तरह के सेंटेंसेस जो हैं आप इसमें आकर यूज करते हैं. सो लाइक यू आर एक्चुअली गिविंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. बिल्कुल बस वो जॉइंट्स लगा रहे हैं अब बस आप वो काव्य से आप टांके लगा रहे हैं बिल्कुल ठीक है. सो अब सेम इज द केस जब आप किसी चीज को हाईलाइट करते हो, किसी चीज को, किसी मुद्दे को, किसी टॉपिक को, किसी बंदे को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को, किसी एडजेक्टिव को आप जो है हाईलाइट करते हो, तो आप क्या करोगे? जब आप हाईलाइट करोगे तो आपने क्या वर्ड्स यूज करने हैं? सी, व्हेन यू आर हाईलाइटिंग, particularly, in particular, specifically, specially, obviously, of course, definitely, clearly, and definitely as well. You are using such words in order to talk about in order to highlight something. तो आप जब किसी वर्ड को हाईलाइट करोगे तो आपने इस तरह के वर्ड्स उसके अंदर इस्तेमाल करने. तो मैंने आपको जैसे स्टार्ट में कहा कि हर वर्ड का जो है, हर सेंटेंस का जो है या हर पैराग्राफ का जो है चेंज वर्ड है, चेंज वोकैबुलरी, आपने उसके हिसाब से जो है आपने एक सेंटेंस को आगे बयान कर रहे हो. लाइक सेम इज द केस. अगर आप कंट्रास्ट बताते हो, किसी का कंट्रास्ट, ठीक है ना, आप किसी को कंट्रास्ट बताते हो, किसी वर्ड का, नाउन का या प्रोनाउन के साथ आप कंट्रास्ट बताते हो, तो आप उसके लिए कौन से वर्ड यूज करोगे? हाउएवर, नेवरथलेस, एडमिटेड, in spite of, still, on one hand, on the other hand, by contract, in spite of. Such are the words you use when you are giving contrast. Right. Contrast मतलब आप overlook देते हो. बिल्कुल I understand. ठीक है. अच्छा, कुछ एग्जांपल्स अगर हम डेमोन्स्ट्रेट करें. दे रहा हूँ, मेरे पास अभी टाइम है, मेरे पास अभी 2-3 टॉपिक्स हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करने के बाद फिर एग्जांपल. अच्छा ठीक है. अब देखिए, when I talk about the reasons and causes, when I talk about reasons and causes. Reasons and causes, right. In order to talk about the reasons and causes, you actually explain the reasons. तो आप reasons को क्या करते हो? Because, owing to the fact, due to, since. हाँ, समझ आ रही है मैडम? ये वर्ड जो है आप तब यूज करते हो जब आप रीजन दे रहे होते हो किसी चीज. बिल्कुल. क्या दे रहे होते हो? रीजन दे रहे हो. तो उसके लिए आपने ये वाला लिंकिंग डिवाइस इस्तेमाल करना है. सही है. जब आप पर्सनल ओपिनियन दे रहे होते हो, when you give personal opinions, तो तब आपने क्या देना होता है? जब आप ओपिनियंस की बात करते हो, आप कहते हो in my opinion, I think, I believe, I admit, in my view, in my point of view, I concur, I agree, I disagree, I cannot accept. You mean like there are so many categories we can use. आप इस तरह जो है, इस तरह जो है ना, वर्ड्स को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, तब जाके आपका एक वो बनता है. True that. ठीक है.
इसके अलावा जो है हमारे पास एक दूसरा है, जब आप कंक्लूड कर रहे होते हो तो ऑलरेडी कंक्लूड को करने का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था जब आप रिजल्ट्स में करते हो, लेकिन उसके अंदर आप कहते हो टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, टू सम अप, टू रिट्रिएट, आई एम इन्फर्ड, आई एम इंक्लाइंड, ये वर्ड्स जो हैं ये आप एक ऐसे को जब ख़त्म कर रहे होते हो तो तब आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इनको याद कैसे रखना है? बस याद करेंगे ना इसको आपने याद करना है, याद करने के बाद सेंटेंसेस में यूज़ करना है इसको, और आपने इनकी यूजेज यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट्स में अगर आपने कंसीक्वेंटली कह दिया तो उसका सारा जो है ना मतलब उसका खत्म हो जाएगा। अच्छा। अगर आप सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आप ओपिनियन दे रहे हो, इट इज रॉन्ग, क्योंकि ओपिनियन आप एट द एंड देते हो जब आप कंक्लूड करते हो। तो ये जब राइटिंग में जब आप काम करते हो अपने लिंकिंग डिवाइसेस में, तो इसका बहुत ज्यादा जो है ना एक असर होता है एक राइटर के ऊपर, साथ ही साथ द पर्सन हु चेक्स योर ऐसे, तो उसके अंदर वो फ्लुएंसी आनी चाहिए। जी हाँ, फ्लुएंसी उसके अंदर होनी चाहिए। और जब आप एक ऐसे के अगर आप फ्लुएंसी की बात करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आप अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, अगर आपके लिंकिंग डिवाइसेस अगर अच्छे हैं, तब जाकर जो है आप एक सही तरह से आप एक उसे कहते हैं कि एक फ्रूटफुल और एक मीनिंगफुल ऐसे आप लिखकर जो है ना राइटिंग टास्क में आगे बंदे को पकड़ा देते हो। तो अगर आप बात करें इन तमाम लिंकिंग डिवाइसेस की, मुश्किल से 50 होंगे। अच्छा, मुश्किल से 50 होंगे। सही, तो मतलब वो इतना मुश्किल तो नहीं होगा याद करना मेरे ख्याल से, थोड़ी सी अगर हम प्रैक्टिस करें तो आसान इसको याद करना है, इसको याद करके आपने इसको सेंटेंसेस में यूज करना है। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ द लिंकिंग डिवाइसेस, आई वुड से it is true that many people living in Pakistan are suffering from the educational problems. However, the government of Pakistan is providing good educational terminologies to the people. तो मैंने क्या किया, however के साथ दो sentences को joint कर दिया। ठीक है। Consequently, many people take admission in the government colleges rather than taking admission in private. Consequently, मैं क्या दे रहा हूँ, रिजल्ट दे रहे हैं। स्टार्ट में मैंने क्या किया, मसला बयान किया, सेंटर में मैंने उसका सोल्यूशन बताया, आखिर में मैंने उसको कंसीक्वेंट कह के खत्म कर उसका एग्जांपल मैंने दे दिया। सो जस्ट एन एग्जांपल। अगर आप बात करते हैं, आई एम इंक्लाइंड टू मेंशन दैट यस KPK's government is doing very well to promote the health sector. I'm inclined to mention. तो मैंने I'm inclined कह दिया, so I'm giving that conclusion of that word. Exactly. तो ये एग्जांपल्स हैं, ये चीज़ें मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ। ये क्लासें इसका इतना कुछ वो रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको अराउंड 2 to 3 days लग जाते हैं इसको सीखने में और सेंटेंस को बयान करने में और सेंटेंस को समझने में और फिर सेंटेंस को अमली शक्ल देने में। तो कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसको याद करना, इसके अंडरस्टैंड करना, इसके जो रूल्स हैं, इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजीज हमने इस्तेमाल की हैं, मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत ब्रीफली बताई है। बिल्कुल। मैंने आपको फुल सारे का सारा बता दिया कि आप किस जगह पे क्या यूज़ करोगे, किस जगह पे क्या यूज़ करोगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यार लिंकिंग डिवाइसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। And is from IELTS point of view as well? Yes. If I talk about the linking device, तो linking device की जो importance है वो ये है कि वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिलाता है और वो रिदम को टूटने नहीं देता। Exactly. ठीक है। अगर वो रिदम टूट जाए तो एक सेंटेंस की जो आप रीडिंग की जब आप बात करते हो वो तमाम के तमाम इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। जब आप आपका एक लय होता है, आपका एक टेम्पो आपका बना होता है, रीडिंग आप कर रहे होते हो, तो वो जब आपका ना बने तो क्या होता है जनाब, आपका सारे का सारा जो है ना आपके जो आपका जो आप ऐसे रीड कर रहे होते हो, like the way you're reading the essay in order to check it, so that entire tempo falls down. I mean that is a negative thing. So in order to finish that negativity from the essays, I have introduced the linking devices to the students just to make them understand that yes, you have to use them in such way. ठीक हो गया। तो आई थिंक कि हमें यही एडवाइस स्टूडेंट्स को करनी चाहिए कि यू हैव टू कम टू आवर office, you have to meet Mr. Ammer Owais so that you can get a full and brief discussion and participation and practice on the linking devices, because जैसे सर ने बता दिया है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा important है from your examination point of view, from the IELTS point of view, right sir? जी मैडम। हाँ, जब IELTS के अंदर जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू नो द लिंकिंग डिवाइसेस, ताकि आपके बैंड्स भी अच्छे आएँ, ताकि आपकी रीडिंग, आपकी राइटिंग जो है वो भी इन्हांस्ड हो, वो भी फ्लुएंटली हो। या एग्जैक्टली। सो व्हाट एल्स डू वी हैव?
अच्छा, अब इस लिंकिंग डिवाइसेस में जो सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स को देखने में मिलता है, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ऐसे को कैटेगराइज नहीं कर पाते। अच्छा। अगर आप ऐसे को कैटेगराइज करने की बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि आपने ऐसे को हेड, बॉडी, टेल। हेड बॉडी When you टेल। talk about head, you talk about body, you talk about tail. तो हेड में जो है आपने वर्ड्स को यूज करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। बॉडी में आपने सेंटेंस को यूज करना है अकॉर्डिंगली, टेल में आपने यूज करना है अकॉर्डिंगली। तो अगर आप एक 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 लेवल के थ्रू आप जा रहे हो और उस लेवल के थ्रू जो है आपने एक सेंटेंस को बनाया, आपने उसको सही शक्ल दी, लेकिन आपकी लिंकिंग डिवाइसेस जो है वो उस तरह की जो है ना उसको मतलब नहीं मिल रहा, तो तब जाकर जो है क्या होगा, आपका ऐसे जो है उसके रिजल्ट भी कम आएगा, आपको उसके बैंक्स भी कम मिलेंगे। और रीज़न आपके उसमें रीज़न ये दिया जाएगा कि आपने एक ऐसे को सही तरह से बयान करने की कोशिश नहीं की है। बिल्कुल, दिस इज वेरी सबसे बड़ा मसला ये है। या और इस चीज़ को हल करने के लिए जो है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ कि मैं उनको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर मैं उनको सिस्टम बना कर दूँ, तरीका उनको करके दूँ, उनको सिखाने की कोशिश करूँ, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय उस टाइम को कुछ कैश करें और उससे कुछ सीखें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अब ही है। मेन चीज़ ये है। सो दिस इज अबाउट द लिंकिंग डिवाइस एंड दिस इज या अबाउट द लिंकिंग डिवाइसेस। जब आप लिंकिंग डिवाइसेस को मेमोराइज करते हैं, मेमोराइज करने के बाद आप उसको जो है अमली शक्ल देते हैं, अमली शक्ल देने के बाद क्या होता है, आप उस जो होता है आपका ऐसे, उस ऐसे को अमली शक्ल देने के बाद आपने जब उसकी प्रूफ रीडिंग करनी होती है, तो उस प्रूफ रीडिंग के अंदर आपको पता चलता है कि यार किस जगह पर आपके लिंकिंग डिवाइसेस ने लैग किया है और किस जगह पर लिंकिंग डिवाइसेस आपने सही तरह से सही तरह यूज से किए। यूज सो आई किया। थिंक दिस इज ऑल अबाउट द लिंकिंग डिवाइसेस। और लिंकिंग डिवाइसेस को मैं एक दूसरा ओवरलुक दे देता हूँ कि दे आर यूज्ड टू हेल्प अ सेंटेंस जॉइंट विद ईच अदर एंड इट प्लेज अ रोल ऑफ अ ब्रिज। जी, एग्जैक्टली इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी लिंकिंग डिवाइसेस। If you guys have any queries, we are with you. We are live. You can ask questions. Sir Amar आपको on the spot answers देंगे. So please come up with some interesting questions to make this session more powerful, more fruitful, more knowledgeable. So guys, we are जी, waiting. Yeah. मैसेज यहाँ पर आया है, मिस सदफ कह रही है, sir, I am from Akoda Khatak and I want to know about the admission of IELTS in your institution. Admission of IELTS already मेरे पास यहाँ पर slots हैं, आप जिस टाइम पर भी आएँ आप तशरीफ़ ला सकती हैं, आपके लिए slot जो है वो हम अरेंज कर देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आप अकोड़ा खटक से आ रही हैं तो ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आप इतने दूर से अपना प्यार, अपना लव हमारे साथ शेयर करते हैं, which really is a good thing. Mr. Abid Shah again says that sir, it is a nice session. Thank you so much for sharing linking devices with us. You're most Okay welcome. ji, Abid Khan, thank you so much once again. Mansoor from Swat. Okay, Mansoor is my student, and he says, "Sir, zata suvinam, tasu live." Yeah, thank you, my dear. Thank you, Mr. Mansoor. Jazakallah, thanks a lot, and इसी तरह जो है अपना लव, अपना सपोर्ट हमारे साथ शेयर बिल्कुल करते रहिए। बिल्कुल। हम यहाँ पर आपके लिए आते हैं, आपके खातिर आते हैं। वी डू कम हियर फॉर यू पीपल टू Yeah. share lot of knowledge with you people, so I believe that you guys will learn a lot from me. You Inshallah. guys will learn a lot from Future Surf Overseas Education Services. Yeah. I want you people to be with me here in the office. If you want to take physical classes of IELTS, it is available, as well as the online classes are available, right? Yeah. So I think I should wind up this session today. I would request my colleague and my co-host, Miss Wardah, to conclude this live Thank you, session. sir. And I think Thank you it's so all much. about Yeah. that we discussed around Yeah. the lexical resources. Exactly. So this is it, guys. Again, if you have any problem, if you want to know more, you can always walk into Future Serve Overseas Education Services. The address is very simple. That is Sheikh Yaseen Trade Center, third floor, main Arbab Road stop. You can also visit our website. That is www.fsoes.com. I would highly recommend you to visit our Facebook page regularly so you'll never miss the chance to attend our live session. So be yourself, take good care of yourselves. Happy Ramadan Kareem once again. Remember us in your prayers and always remember Future Serve Overseas Education is always here for you. Thank you so much.